That's a bizarre statement, right? Yet the most commonly heard one. Hello and Assalamu Alaikum. Welcome to my podcast where Fama says hi. ये एपिसोड पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे as to what marriage is. Today I'd be highlighting a well understood yet a very different side of the society. So if you've not actually heard the first episode, please go back to the album and listen to it first. आज हम जिस चीज को लेके चलना चाह रहे हैं that's actually why people today are running away from marriage. I believe आप सबने नोटिस किया होगा कि आज के दौर में डाइवोर्स रेट काफी बढ़ गया है और शादी ऑन दी अदर हैंड उसका जो रेट है काफी डिक्रीज हो गया है. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटी के जो डिवोर्सेस हैं उन्होंने एक एबनॉर्मल स्पीड पकड़ लिया है. I mean 2022 में there have been more divorces than more marriages. And it's so saddening to know that the couple we really adored once has now parted ways. Have you thought about it कि ऐसा क्यों है? Well, majority की सोच इसी तरफ जाती है considering the fact of celebrities कि ये कहीं टिकते ही नहीं हैं. कोई नया मिल गया होगा. बड़ा sick और अजीब सा mindset है वैसे हमारा. खैर, आज के दौर में शादी is considered a necessity, जबकि if we go back maybe 2 decades ago, शादी एक expectation थी, एक obligatory principle था जो सबने ही follow करना था. लेकिन आज expectation shift हो गई हैं और मजे की बात ये है कि एक extensive research के बाद बहुत सारे रीजंस सामने आए हैं जो एक रिफ्लेक्शन है कि लोग शादी क्यों नहीं करना चाहते. एंड सरप्राइजिंगली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 1 in 7 people do not want to get married ever. Okay, that's strange, no? और तकरीबन 27% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी को लेकर बड़े मिक्स्ड ख्यालात हैं. They want to get married but they don't want to get married maybe because they're confused. कई ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि औरत की एम्पावरमेंट शादी से आती है. I mean, शादी completes a woman. फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नजदीक शादी is just a contractual thing. उनके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती. अब क्योंकि यहाँ बहुत से religious conflicts आ जाएंगे, इसीलिए I'd prefer not talking about the latter. Majority अवाम ने वेस्टर्न्स के एकदम आप अपने एक नॉर्मल सर्कल से एक नॉर्मली एक्सटेंडेड सर्कल में आ जाते हैं. प्लीज बेयर इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियन द कल्चर दैट वी हैव, दिस सोसाइटी, आवर सोसाइटी. और यहाँ पे अनअनाउंस्ड और अनसीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमारे सर डाल दिया जाता है. प्रेशर में आकर हम पहले साल में बच्चा भी पैदा कर लेते हैं एंड द जर्नी इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. और जब एक हो जाए तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है. नाउ दिस माइट ऑल साउंड नेगेटिव कि व्हाई एम आई पोर्ट्रेइंग अ वेरी नेगेटिव साइड ऑफ शादी, बट दिस इज समथिंग नो वन एवर टेल्स अस अबाउट. शादी इजंट नेगेटिव. नो, आई रियली डू नॉट want to portray that. Shadi is not negative. It's a lovely combination and the coupling of 2 people. लेकिन the problem is हमारे यहाँ शादी 2 लोगों में नहीं 2 खानदानों में की जाती है. अपने लिए सोचना, मियाँ बीवी का स्पेसिफिकली अपने लिए सोचना is equivalent to गुनाह. ये कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमागों में इंजेक्ट कर दिया गया है कि ससुराल को खुश रखना है चाहे अपनी जान पर बनाए. And this is not only for the women, I believe, and I've seen that men these days, they go through the same thing. It's on both sides. Now, coming on the possible reasons why people have started giving up the concept of marriage, it's basically because they're more career-oriented now. Shadi ki commitments, they actually seem draining. So, they'd rather focus on the career first. The people, they're more career-centric towards life now. फिर एक वजह ये भी आ जाती है कि शायद हमारे पास्ट में कोई ख़ास एक्सपीरियंसेस नहीं थे जिन लोगों को द पीपल वी लुक्ड अप टू उनके शादी से कोई बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे और इस वजह से हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हम भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या ये एक वजह हो सकती है कि हमारे दिल से शादी उतरती जा रही है.
मूविंग ऑन, फिर एक वजह ये भी होती है कि व्हाट आई बिलीव इज कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा जो कॉमन चीज़ हो गई है वो है एक टेरर ऑफ गेटिंग रिफ्यूज्ड. मे बी इफ द फर्स्ट शादी डजंट गो वेल तो उनको लगता है कि जो लेबल है ऑफ डिवोर्स विल नॉट लेट देम ब्रीथ. इसीलिए बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खौफ देती हैं कि हमें शादी शायद करनी ही नहीं चाहिए. और अगर हम इन रीजंस को खोलने बैठे तो मेरा ख्याल है कि अच्छा भला इंसान जो कि फुली अग्रीड है टुवर्ड्स गेटिंग मैरिड वो भी शायद अपने डिसीजन को एक दफ़ा रिकंसिडर करेगा. सो लेट्स नॉट गो देयर. अब हमारी प्रेजेंट सोसाइटी में हो क्या रहा है एक्चुअली, हम कैजुअल रिलेशनशिप्स को इतनी प्रेफरेंस देने लग गए हैं कि हमारे नज़दीक हलाल मैरिज कम्स विद अ लॉट ऑफ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो हमें लगता है शायद हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते. फिर द लैक ऑफ एजुकेशन about this very famous concept of feminism, it has bent our interest towards insane concepts. Feminism is not wrong, but it has been portrayed in a very wrong way. It has molded the mindsets of young people, the young generation, कि शादी तो भाई एक patriarchal institution है और हमें इसमें बिल्कुल नहीं घुसना. And we just have to, we just have to stand up for ourselves. So this is something that has actually built this negative image. Now the point I'm trying to clear out is कि शादी ना करने के 200 reasons मिल जाएंगे. Because if you don't want to do something, you'll find hundreds and thousands of reasons for not doing it. But if you want to do something, and even if you find one single reason for doing it, you'll definitely just jump into it. So don't just make up your mind under the influence of other people. They've had their share. They've lived their life. Your life is different from them. You're responsible for the good that you're going to bring into your life. No one else is. So if you don't want to get married, just don't. But make sure your perspective is not an inspiration for others. जो आप सोचते हैं वो दूसरों के ऊपर impose नहीं हो. This is what you're supposed to do. Let people think for themselves. If they want to get married, let them. And at the end, what's meant to happen will always find its way. And I believe I was pretty much able to tell you guys everything and highlight you about the very basics and major things. कि शादी है क्या? You need to educate yourselves. Not that I'm married, and no, I do not have a marriage wala experience, but still considering the fact that people around me who are married and what they're going through and the kind of people, what they're thinking about marriage, I really wanted to talk about it. So yeah, that's it for today's episode. And for me, I've shared what shadi means to me. It's in the previous episode, and inshallah I will get married once the bell rings in my heart. And I pray you all get the best of what you deserve. अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ मज़ीद खट्टी मीठी बातों के साथ. I'm more than open for your suggestions as to what topics you want me to share my views over. So reach me out through my Insta DMs. It's drowsy_yogic farmer. The ID is